see different types of equation. ठीक है, ये एक चीज मुझे बताना था, मैं भूल गया. Just I'll tell you here. Different types of equation. See, x is equal to a sine omega t. X is equal to a sine omega t plus phi. And x minus x naught, or x is equal to x naught plus a sine omega t plus phi. All these are equation of SHM. ये तीनों के तीनों ही SHM के इक्वेशन है. क्या है, मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था, मीन पोजीशन, ओरिजिन एंड इनिशियल पोजीशन. तो पहले वाले में क्या है कि इसका इधर की तरफ x इक्वल्स टू 0 भी होगा, यही इसका मीन पोजीशन भी होगा, और यही इसका इनिशियल पोजीशन भी होगा, t इक्वल्स टू 0. दिस इज ओके गुराशीष. हाँ. दूसरे वाले इक्वेशन में क्या होगा कि दिस इज x इक्वल्स टू 0, दिस इज मीन पोजीशन, but t equals to 0 is somewhere else. This is the initial position. Right. And this distance is x naught. So this phi is sine inverse of x naught by a. And this is like, ki this is x equals to 0. And this is a minus a, and this is plus a. This is the mean position. This is somewhere here. This is t equals to 0. That is initial position. All are at different points. Got it, Kurashish? Yes. So this is the difference between all the situations. Right. Now, also, if equation is x is equal to a sine omega t plus phi, we can also express this equation as a sine 2 pi t into t plus phi, because we know that omega is 2 pi upon t hota hai. T is equal to 2 pi upon omega. So I can even write my equation in terms of time period. Sometimes this equation is more convenient while finding out times and all. कि आपको पूछा रहेगा इधर से इधर जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो this can be done.